Okay, are we live or not? I don't know right now. Okay, we are live. I think we are live. Yeah, I think we are live. Are we live? Oh yeah, I think we are live. Yes, नोटिफिकेशन आ चुका है लाइव का। और मैं यहाँ पे डेस्कटॉप वॉल्यूम देख रहा हूँ, बट डेस्कटॉप वॉल्यूम इज़ नॉट कमिंग क्योंकि डेस्कटॉप वॉल्यूम अभी ऑफ है। यहाँ पर मैं इसको ऑन करूँगा तो हाँ डेफिनेटली आ जाएगी। सो अभी के लिए वी आर वेटिंग फॉर ज़ेनफोन एंड ज़ेनफोन 8 सीरीज़ गाइज लॉन्च हो रही है। आप में से कितने जाने यहाँ पे एक्साइटेड हो फॉर दिस सीरीज़, मेरे को ज़रूर से बताओ। एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दिस एंड मज़ा बहुत आने वाला है। या ओके, नीरज आ गए हैं, VHL टेकीज़ हेयर, भास्कर आ चुके हैं एंड वेरी नाइस भाई, नाइस वीडियो। ओके भाई, अभी तो नाइस वीडियो अभी शुरू नहीं हुई है, बट थैंक यू। एंड म्यूज़िकल हॉल्ट सर जी, लव यू टू मेरे भाई। ब्रो अब गिव अवे कब रख रहे हो? गिव अवे यार कुछ ही देर पहले हुआ है, तो अभी उनका पहुंचाना है, मेरे को भी पहुंचा नहीं पाया हूँ बिकॉज ऑफ पेंडेमिक इश्यूज़। तो यहाँ पे और भी यार आ जाएंगे। गिव अवेज़ का क्या है, गिव अवेज़ आते रहेंगे। हाय VHL टेकी, इंडिया में या वर्ल्ड वाइड? नीरज जी वर्ल्ड वाइड जा रहा है अभी, इंडिया में अभी आ जाएगा, इंडिया में भी अभी वर्ल्ड वाइड जा रहा है। एंड आई एम वेटिंग 5 मिनट्स रहते हैं इसको आने में, शुरू होने में। आई एम नॉट फोन आई एम फॉर यू हेयर। थैंक यू VHL मेरे भाई, लव यू। और नीरज इंडिया में, हाँ ये तो हो गया ना। शिवेश हेलो, प्राइस कम रहेगी तो एक्साइटेड रहेंगे। बिल्कुल यार, प्राइस पे डिपेंड करता है सब कुछ। बहुत दिनों बाद लाइव आए शिवेश भाई, बस ऐसे ही है थोड़ा सा। अशरफ हेलो होप योर फैमिली इज सेफ। बिल्कुल अक्षय भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और एकदम सभी ठीक हैं। मैं भी यही होप करूँगा आप सब भी बिल्कुल ठीक हो और आपकी फैमिली ठीक है। एंड एक चीज़ और यार, मेरे बाकी के जो चैनल्स हैं ना, एक जो शॉर्ट्स वाला चैनल, मम्मी का चैनल राशि की रसोई, और एक मैंने एपेक्स के लिए चैनल बनाया था जो कि टेक्स मम्मी व्लॉग्स के नाम से होता था यार, वो उसकी नोटिफिकेशन ही नहीं जा रही किसी को भी, पता नहीं क्यों। सो अगर मैं कम्युनिटी पे डालूँ तो व्यूज़ आएंगे, नहीं तो वो ज़ीरो रहते हैं। आई डोंट नो उसमें क्या हो रहा है, तीनों चैनल्स पे इकट्ठे ही हो गया है, तो दिमाग ख़राब हो रखा है मेरा। बाकी शॉर्ट्स की मैं इस वाली कम्युनिटी में डाल देता हूँ, बट मम्मी और वो वाला काम ख़राब हो गया है। तो मैं इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स वगैरह डाल रहा हूँ, मॉम के इंस्टाग्राम के अकाउंट पे रील्स जा रही हैं फूड के रिलेटेड, तो आप दोनों वहाँ पे जा सकते हो। इंस्टाग्राम पे टेक्स स्वामी राशि की रसोई आप सर्च करके यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। और अब एक शाउट आउट टू द्रवेश ड्रॉदेश तिवारी, HDXT टेक्स, इनका चैनल आप देख सकते हो। फरीज भोज भाई, प्राइस क्या एस्टिमेशन है? मेरी कोई एस्टिमेशन नहीं है, एसूस के माल में मैं ब्लैंक रहता हूँ। 5G लूँ या 4G? VHL मैंने 5G के रिलेटेड अभी वीडियो डाली है परसों, तो वो आप चेकआउट कर लो एक बार। सावधान रहे, सतर्क रहे, जय हिंद। भाई जैसे ही लॉन्च हुए तो मेरे को देना गिफ्ट में। ओह, मेरे को कौन देगा? पहले मेरे को तो दो। तो यहाँ पे 8 को इन्होंने एज ए इन्फिनिटी साइन दिखा रहे हैं। देखो यार, जहाँ तक मुझे लगता है ना, 2 फ़ोन आने वाले हैं, और एक होगा विदाउट फ्लिप कैमरास और एक आई थिंक होगा विद फ्लिप कैमरास, जहाँ तक मुझे लगता है। मज़ा आने वाला है। तो बाकी पता नहीं है, काफ़ी कुछ लिख रहे हैं यहाँ पे। कॉम्पैक्ट साइज़ होगा, ये होगा, वो होगा। मज़े तो आने वाले हैं और मज़े आपको भी आएंगे। काउंटडाउन लगा हुआ है 3 मिनट का, और 3 मिनट के बाद हम मज़े लेने वाले हैं। अभिषेक राज हेलो, सोशल मीडिया हाय। और योर थॉट्स ऑन OnePlus 9 सीरीज़ 5G सीन? स्वरूप यार 5G का देखो, ये थोड़ा ब्लंडर ही है। कभी कह देते हैं बैंड बढ़ जाएंगे, उसके बाद कहते हैं नहीं बढ़ेंगे। इट्स अ वेरी गंदी वाली बात। अभी मैं तभी कह रहा हूँ 5G फ़ोन्स का भी इतनी जल्दी मत करो यार, इट्स अ गिमिक। अभी 5G जल्दी नहीं आने वाला। अभी 2022 के अप्रैल से पहले तो ऑक्शन ही नहीं हो सकते, तो फिर पता नहीं कब मिलेगा 5G। बिग शाउट आउट टू सूरज भाई, लव यू। लावा Z2 मैक्स का रिव्यू करो यार। देखो अगर ब्रांड बेचता तो कर देंगे, वैसे इतना कोई खास फोन मेरे को लगा नहीं है, सो मैं इतना रेकमेंड भी नहीं करूँगा। iQOO 7 लेजेंड से कंपेयर कर देना। ओके, ट्राई करते हैं भाई। कोविड के वहाँ पर क्या सीन है? एकदम फुल ऑन सीन है मेरे भाई, बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और स्पेसिफिकेशन टॉप नॉच होने वाले हैं रवि भाई, एकदम तगड़े वाले।
मज़ा आएगा। पोको यूआई के बारे में क्या विचार है? HDXT जब पोको यूआई जो है ना वो अपने इशारों पे चलेगा ना तब देखेंगे। अभी तो MIUI के इशारों पे चलने वाला है, क्योंकि इसका जो मेन वो MIUI के ऊपर भी बेस्ड होने वाला है अभी। ओके 50,000 से ऊपर प्राइस आएगा लगता है। Asus ज़्यादा ही रखता है 8, ये जो नंबर सीरीज़ है इनकी, देखते हैं। आई कुछ 7 या लेजेंड अकॉर्डिंग टू योर बजट। कम है तो 7 वाला, ज़्यादा है तो लेजेंड वाला, सीधी सी बात है। मिन्नी यार पता क्या है फरीज भाई, ऐसा लग रहा है कि Zenfone 8 आएगा, जो कि मिन्नी मिन्नी बोल रहे हैं ना, और वो जो है थोड़ा कॉम्पैक्ट साइज़ के साथ होगा, फ्लिप कैमराज नहीं होंगे। और एक हो सकता है Zenfone 8 फ्लिप या प्रो के नाम से आ जाए, उसमें फ्लिप कैमरा देखने को मिल जाएगा बड़ी स्क्रीन के साथ। रियलमी Xiaomi जैसा लंबा लॉन्च इवेंट होगा ये नहीं कह सकते। सारे फ़ोन में N78 बैंड क्यों ज़्यादा होता है? विनी रिएक्ट्स गेमिंग फ़ोन अंडर 25,000। एक सेकंड दो मेरे को, सॉरी मैं यही हूँ गाइस, मैं कहीं नहीं गया, जस्ट माय हॉट वाटर इज़ हेयर। थोड़ा सा गर्म पानी पीना शुरू कर दिया है भाई ने, थोड़ा पेट निकल रहा है हमारा, ज़रूरी हो गया है। 25,000 में गेमिंग फ़ोन चाहिए तो यार तुम पोको X3 प्रो के साथ जा सकते हो, या फिर इसके अलावा अगर तुम्हें जाना हो तो रियलमी के जो X3 वगैरह हैं वो ठीक है, बट पोको X3 प्रो के साथ जाओ अगर सिर्फ गेमिंग करनी है तो और कोई दिक्कत नहीं है। Xiaomi मेकिंग अस फूल, बहुत बड़ा। माइक्रोमैक्स इज गोइंग टू इन्वेस्ट इन डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, राहुल शर्मा ने बोला। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा कुछ हो जाए, धीरे धीरे हमारी इंडिया बढ़ती रहे आगे, तो और क्या चाहिए। हाँ कल नोट 10 ऐसा अगर लॉन्च हो रहा है तो क्या कहते हो उसका इवेंट भी करें, कितने बजे मेरे को ज़रा बता देना। मैं थोड़ा सा ऑफ हो रखा हूँ इस वक्त, तो थोड़ा चल रहा है ऐसा कुछ ना लाइफ में, तो थोड़ा सा ऑफ हो रखा हूँ, तो मेरे को थोड़ा टाइम बता देना, मैं शायद फिर इवेंट ही ले आऊँ। Zenfone Max Pro M3 कोई अपडेट ना भाई, ये तो Asus के पास ही अपडेट नहीं है। देखो यार लॉन्च शुरू होने लगा है, तो मैं इसकी वॉल्यूम ऑन कर रहा हूँ। Hello and welcome. Thank you for joining us today. I'm very excited to share the next generation of Zenfone with you. Asus blends our know-how 12 PM, okay, ठीक है। customer feedback to achieve new milestones with each Zenfone generation. We are laser focused on innovation and dedicated to giving users the best experience possible. This generation maintains the define ordinary spirit. आवाज़ कम है, मैं आवाज़ कर देता हूँ गाइस। What they cannot find elsewhere. Zenfone has offered users novel innovations year after year. 2 years ago, we created Zenfone 6, the world's first smartphone with a flip camera. Today, we have taken Zenfone Thank you HDXT, love you bro. By making them big on performance but compact in size. PLI स्कीम अभी नहीं मैंने पढ़ी है। What is that? Performance, perfect pocketability, a stunning display, and a pro-grade camera system. And it fits all that easily in the palm of your hand. It defies ordinary. Yeah, Redmi Watch पे आ रही है definitely. So you may have to see it to believe it. Without further ado, let's meet the Zenfone 8. Big on performance, compact in size. I'm sure you cannot wait to hear more about our new Zenfone 8. So let's welcome Sasha. Excited. Asus के phones पसंद है मुझे। Thank you, SY. Thank you, SY, and hello everyone. I have a feeling this is probably not what you expected us to reveal today. A compact phone? And yeah, at first it may we need look a just compact like a phone, typical phone, 8. but as SY mentioned, our motto is defy the ordinary, and the Zenfone 8 definitely lives up to this. At Asus, we are well known for our large phones with our massive batteries. Our शिवेश काफ़ी अच्छी चीज़ है, एंड अगर मैं इसके ऊपर मैं थोड़ा सा देखूंगा, मैं वीडियो बना पाया तो ज़रूर बनाऊंगा। So chances are, if you know and like मनु कुमार भाई तो अपने phones, अलग ही है ना, you like क्रिटिसाइज large करते रहते phones. हैं। The bigger the better. So why are we launching this surprisingly MIUI का हाल compact देखो। Zenfone here today? Well, phones are less and less about making calls and more about browsing the web, enjoying video games, enjoying videos, capturing the world around us, and sharing it. And for all this, larger displays generally improve the user experience.
This does come at the cost of ergonomics though. And an increasing number of our customers Okay, जो आ रहा है वो better like करते ergonomics जाना from guys. us. We need And likes. They don't consider Cheers. a smaller display and a smaller phone a drawback. Actually, on the contrary. There are several compact phones on the market already, but they all come with compromises. So we set out to make the most ergonomic phone we could that's still truly a flagship without compromises. But what makes a phone ergonomic? From our study, the key factor is the length of VHL the thumb. Texwami Instagram पे If you मैसेज want करना your मैं phone आपको to बताऊंगा, fit ठीक into है? your palm and be able to reach the left and Oh, right side of wow, the display छोटा phone. effortlessly. Pretty much all flagship phones these days are approaching a width of 80 millimeters. But research shows that over 95% of us have a thumb length of 70 millimeters or less. So to be ergonomic, a phone should ideally have a width of less than एकदम 7 बड़ी डिस्प्ले, millimeters. ज़्यादा बैटरी To कंजम्पशन. illustrate this, Definitely. here are some thumb zone simulations comparing different phones. Green is where your thumb can reach easily, and red is where you probably can't reach even when stretching your thumb. Exactly. After going through several designs and prototypes and some clever math, we concluded that around 68 millimeters Memorable is the moments sweet क्या हो spot गया भाई? that Why are you even users spamming? with a smaller than average hand can use comfortably while still giving the biggest possible display space on the phone. Alright, so we know the ideal width. What about the height then? Well, in theory, the taller the phone, the better, since you increase the size of the display, right? Memorable But comments besides मैं looking block कर pretty दूंगा अगर आप odd, ऐसे spam a really करोगे, tall please, phone बाकी increases the disturb हो रहे हैं. overall weight, and even worse, shifts the weight balance, making it uncomfortable to hold. A tall phone also fits in less pockets, so there's a clear upper limit for how tall phones should be. After another round of simulations, prototypes, and math, we found the sweet spot to be just under 150 millimeters. At that height, phones fit into pretty much any pocket, from jeans to shirts and jackets, or even leggings. So here it is, the Zenfone 8 in all its ergonomic glory. What probably Like मारो, surprises like you मारो, is that we सारे managed like to मारो. fit a Wow, 5.9 display inches into phone, this guys. super compact chassis. Besides the height and width of the phone, the shape of its edges and corners is crucial for ergonomics as well. We kept our comfortable signature 3D curved back design that we perfected on our Zenfone series over the years. And we adjusted the display edge to be as round and smooth and comfortable to hold as possible. We use a frosted matte glass back, Frosted which matte looks and glass. feels really premium, has a nice grip to it, and rejects fingerprints pretty well. And we have two color options now, a classy obsidian black and a horizon silver. Looks more grey, On the horizon grey and silver, silver. you can see an understated but cool blue and yellow glow depending on which angle you look at it from. Now, making a compact phone in itself isn't all that difficult. If you cut enough corners here and there, you can make it happen. But like I mentioned earlier, we felt that other solutions on the market made too many. भाई dual camera compromises. चलेगा पर बढ़िया वाला combination More हो, compact बात phone खत्म. shouldn't mean it's a budget phone with budget components And like and कर made दो from अपने लिए cheaper जो देख materials. रहे हो. From Thank you. surveys, we know that performance and battery life are the two most important valued features customers desire in a Snapdragon compact phone. 888. So we set out to make a true flagship phone in a compact chassis. And in true Asus fashion, we pushed everything to the limit. And we didn't just try to make it barely good enough to qualify as a flagship. First of all, we naturally chose the 5nm Qualcomm Snapdragon 888 to sit at the heart of the Zenfone 8. Next up, the battery. Best We processor wanted a जो अभी तक large मिल battery सकता that matches the Snapdragon 888. So we split the motherboard into two pieces and then used an interposer to essentially stack the two pieces on top of each other to reduce the overall footprint, which allowed us to pack in a generous 4000 mAh battery. So we have a Welcome, Raj 5.9-inch bhai. display, a Snapdragon 888, and a 4000 mAh battery Insta in a ID super text compact Swami. chassis. This is what we think 4000 the mAh Zenfone की 8 battery. should be all about. It's powerful, compact, and छोटी है, optimized but for one-hand क्या कर operation. सकते हैं? Now let's But take a छोटी very display भी है, close-up look at consider the it. insides of the Zenfone 8. Oh, The Snapdragon 888 delivers not just the best CPU and GPU performance, but comes with support for incredibly fast and low latency 5G and Wi-Fi, Wi-Fi 6E as well. 6E. And thanks Okay. to the advanced 5nm manufacturing process, it's more power efficient
and is up to 25% faster, with graphics performance up by as much as 35%. The Zenfone 8 really is a compact powerhouse and punches well above its weight and size. You can clearly see that the Zenfone 8 delivers higher scores than other phones based on the same platform. In this simulated heavy multitasking benchmark, we run 24 popular apps and we launch one after the other 3 times in a row. The Zenfone 8 delivers impressive performance as well. The Zenfone 8 is equipped with up to 60 Fused ID से नीचे comment आया होगा वो मेरी Insta ID है guys. DDR5, while most other phones use only 5500 megabits per second memory. Now let me show you our 4000 milliampere hour battery pack. Now that's a big battery, right? It also comes with 30 watt hypercharge adapter, बैटरी को which बड़ा lets बोल रहे you हैं. top up this battery right here from 0 to 50% in a very short period of time. Preferences for 30 battery watt life charger. versus performance vary from person to person. And 40 watt 4000 mAh के लिए situation, बहुत ज़्यादा है. maybe you want to play a game or edit a video and you want every drop of performance. Or you just decided to go out with your friends and you want a battery life boost since this might be a long night. We are giving you several different modes that you can quickly switch between that either prioritize the performance or that buy you up to 3 hours of extra battery life. There's also an advanced mode that lets you fine-tune every little dial and tweak everything individually. Here at Asus, battery health has been one of our strengths as well for years now. You can slow down the charging speed and limit the maximum charging capacity to extend the lifetime of your battery for years to come. And we even built a smart charging algorithm right into our alarm clock. अच्छा guys, like So please, that जिसने अभी adjusts तक the like नहीं किया, हमें charging like का speed, and the target battery पूरा करना है charges अपना. as slowly फटाफट as like करो. possible while you sleep, which extends the battery lifetime. And the battery reaches 100% just सामने as you देख get भाई. up and pick up your phone. You won't actually see any of these components, so let me show you what you'll spend most of your time looking at, the display. I wish I really was at the beach, but this display is pretty convincing. The Samsung Diamond Pixel OLED display is another highlight of the Zenfone 8 and couldn't be more of a flagship panel. Samsung का With a AMOLED high-speed display है 120 refresh Hz rate, के साथ. everything looks and Victus feels glass really है. smooth. All of this comes wrapped in and protected by the latest Corning Gorilla Glass Victus. It covers an impressive 112% of the DCI-P free color gamut and produces super vibrant colors. And with a delta E below 1, it's also very color accurate and reproduces 1100 nits. realistic and lifelike colors. And thanks to our collaboration with Pixelworks, videos and pictures look crisp and vibrant. As we showed earlier, the bottom half of the display is where you interact with the touchscreen. भाई पंचोल आपकी मर्जी है, आपको क्या पसंद आता है. Ergonomics even further, we added a new one-hand mode that lets you pull down the entire UI to the bottom half of the display. This lets you reach any part of the phone's interface easily and effortlessly. I'm sure you're curious about the camera system on the Zenfone 8, so let me show you. Camera-wise, we obviously kept the same camera system that won the famous MKBHD camera competition, where end users voted for which pictures they liked the best, without actually knowing which phone those pictures were taken. Presentation काफी अच्छी है इनकी. The 64 megapixel main camera is not just great for daytime photos, thanks to the large sensor dimensions 64 and megapixel camera technology in the Sony IMX 686. Nice, no problem. अच्छा. This combined with the high gain algorithm can make 108 megapixel नहीं चाहिए, हमें अच्छा वाला कैमरा चाहिए, बात कर दो. Great shots even in dark environments. We also have a 12 megapixel And Asus के cameras that killing essentially होते हैं, lets you killing. zoom out and take 12 the pictures megapixel if you ultra take wide. a few steps back to capture a more immersive shot. It also supports dual pixel autofocus, which is rare for ultra wide cameras. Dual pixel. This means you can focus quickly and have a large focus range. 4 so centimeter sure का super nobody macro looks भी ले blurry पाएगा in wide group camera. picture. And it also enables you to do close-up macro shots too. The selfie camera in the Zenfone 8 uses the latest and greatest Sony IMX 660. 12 GB को कोई ज़रूरत नहीं है दोस्त. Selfies while taking up as little space. Okay, on the 12 display megapixel as front possible. camera. And it too supports dual pixel autofocus for sharp and crisp images. Amazing Beautiful cameras, weather we no got doubt. outside. In case you get caught in the rain or accidentally splash some water on your Zenfone 8, don't worry. Thanks to an IP68 rating, you're good and you can have your peace of mind. IP68, nice. But hey, what do I know about photography? So don't take it from me. Let me introduce you to Kyo Chen.
Hi, Sasha. Oh, hello. Kyo is a professional photographer and designer that we've been working with for many years now. So Kyo, tell us about your experience working with a Zenfone 8. Thank you. Thank you, Sasha. Hi Hi everyone, my name is Phil and I come from Taiwan. I'm a visual artist who works ओके in लाइक नहीं कर रहे तो बहुत गलत बात है I यार love मैं आपको travel and ट्रांसलेट भी करके दे I रहा have हूँ created तो many लाइक कर दो यार artistic works through my sketches, designs, and photography. I have been using Zenfone for almost 6 years now. Thanks to this, I have been able to easily capture many beautiful and incredible scenery that touched me deeply. ऐसा लग To रहा है me, ये इंग्लिश में photography is ट्रांसलेट कर neither रहे हैं purely a वीडियो job nor purely an act of creation. Instead, it represents an accurate record of everything that पता goes नहीं। on in my life. Thanks to Asus, I had the opportunity to experience the new Zenfone 8 in advance for a few weeks. And the size is just perfect for people like me who enjoy outdoor photography. गाइस लाइक कर Sometimes दो when I go प्लीज climbing, I will see We an need interesting likes. scene, but be unable We need to likes. capture it right there. मोटिवेशन But with थैंक Zenfone यू 8, I can लाइक easily मार shut दो it with one hand while keeping me safe with the other hand. I'm also very happy with the phone's color presentation and the level of detail. I can capture everything that I could ever want. I would like to share some of my photography taken by Zenfone 8 to you. The आनंद frantic यार, pace अगर of comments working में in a गाली city लिखोगे तो block makes me सीधा। seek out the embrace of nature. Most of the time, I like to drive to places where there are fewer people. ओ क्या बात है शिवेश क्या I feel बात like I'm है leaving behind all my worries, and then I feel free. During this limited time, भाई I 18 like जीबी to रैम head आपको out to the खींचने के लिए forests होता that are है away from आप the सब city. एकदम से फोन लेना चाहो I'm और always इसमें full of 18 जीबी रैम है anticipation जिन for लोगों the को इतनी surprises नॉलेज that नहीं Mother है Nature will मेरा फ्रेंड है present. उसको 8 जीबी ही चाहिए I like the नॉर्मल से size फोन of में the Zenfone 8 जो मैं जरूरत ही because I नहीं can easily take pictures with just one hand. When I look up at the treetops towering above me in the forest, or वाओ look down at the babbling brook running over my feet, Asus or 5Z even का when कैमरा ही I इतना clamber up अच्छा the था rocky आई path, रिमेम्बर I can take pictures easily. 6Z का भी बहुत अच्छा था When the light becomes dim, I will turn on Pro mode and continue taking क्या की pictures. पाठशाला इंडिया में नहीं आ रहा है Zenfone अभी 8 लॉन्च now डिले allows कर दिया users to define मैं भी their own सैड हूँ इस settings बात in से the दिस camera फोन विल बी अ This बैंग means I भाई can quickly मुकेश choose भाई my preferred modes. ज़ेनफोन्स When बहुत I'm in करीब a है pitch दिल black के valley, I can ज़ेनफोन rest 5Z assured से देख that रहा I हूँ उनके will still be कैमरास able बड़े to बढ़िया होते capture all the हैं और glittering stars अच्छा in नहीं the लग रहा कि अभी डिले हो गया है sky. Sometimes when I'm taking photos, Thank you for joining, I'll be Mukesh bhai. interrupted by a sudden Love you. rainstorm or splashes of water. I might even miss the chance to take some rare and beautiful pictures. But with the Zenfone 8's IP68 rating, it doesn't matter पोको if X2 में it's sunny or IP68 rainy कब आया days, मेरे दोस्त but whatever environment I'm in. और I can इसकी take as many ऑप्टिमाइजेशन और pictures उसकी as I want ऑप्टिमाइजेशन का ना and just इतना focus बड़ा on गैप the होगा scene in front of me. वाओ लुक एट दैट पिक्चर I hope you enjoyed them. Thank you, Kyo. Those were some really impressive pictures. Thank you, Sasha. Next up, let's look at इंडिया the का भी sound कुछ नहीं system बता on the सकता मेरे Zenfone. भाई अभी When making a phone this compact, there obviously are some compromises we had to make. And yes, as you can see, we didn't फ्लिप have आ space सकता है for अभी तो 8 2.5 के बारे में millimeter बता रहे हैं audio इसके jack. बाद शायद फ्लिप की बारी I आ wish I जाए could just magically add सो इट्स one. एल्युमिनियम फ्रेम पता चल रहा है Oh, that was easy. एंटीना बैंड्स हैं Sound quality and volume in a smartphone is something else that Asus is well known for as well. Not having to resort to headphones to watch videos or listen to music in good quality is definitely स्टीरियो a big स्पीकर्स plus. हेडफोन जैक And thanks और to क्या two चाहिए large speakers, a Cirrus Logic Smart Amp, and direct audio tuning, we make it happen. This brand new amplifier allows us to achieve a higher dynamic ओके range शिवेश and यहाँ पे notably मुकेश भाई ने improve बता दिया है bass Ryzen precision 9 ले and लो volume. 5950X It ले लो also ensures a stable So, tonal AMD balance Ryzen 9 at all volume 5950X, levels without बहुत बढ़िया। distortions at low or high volume settings. Direct has some really dark magic algorithms at play here, which allow us to perform especially well when it comes to lower frequencies, creating a richer, undistorted bass experience. Everyone has a different preference for audio. Some of us are very Thumbnail यार नई sensitive to PC पे। specific frequencies, for example. So naturally, our Audio Wizard app is still here in the Zenfone 8 with 4 quick profile settings and 10 EQ sliders for manual fine-tuning. थैंक यू अनुज But that's not all for today. You probably expected the Zenfone 8 to be more like the Zenfone 7.
a large phone with innovative camera, flip mechanism, a huge display, free of notches or Now holes, it's come the and a 8 massive Pro battery. or 8 Flip. Both the Zenfone 6 and 7 were very well received, especially by photographers and creatives. So why don't we refresh this phone series? 8 Well, Flip? we do. Meet the Zenfone 8 Flip. Oh For my anyone god, who this is uses the their hero. selfie camera a lot, there isn't anything on the market that gets close to the resolution and quality 500 of our लाइक flip टारगेट camera. दिया है मुकेश It also भाई ने, enables several तो करो cool new पूरा. ways of taking मुकेश pictures भाई and ने बोला है videos तो that are करना more बनता है. immersive फिर and दोस्त लाइक करो, captivating. मुकेश By भाई के लिए tracking करो, the face, मेरे लिए करो, object, or slowly अपने लिए pan the करो. camera, लाइक it आना looks चाहिए. like a basic So triple built-in cameras gimbal. back पे. And we tweaked and refined our flip camera gear and motor system further for an even longer lifetime. Under a typical scenario where you use it 100 3 times lakh per day, flips. it's now rated to last over 8 years. The Zenfone 8 Flip comes in 2 colors that match the overall look of the Zenfone 8, Galactic Black and Glacier Silver. Both use a dual-layer optical coating process. When you look at the Galactic Black under bright light, you'll notice that it's actually a very Love dark you Mukesh blue. bhai, love you. And while the Galactic Oh, Silver Galactic is Black, just like the Glacial Horizon Silver. on the ये वाला Zenfone black 8, ज़्यादा अच्छा with लग रहा है मेरे yellow को. and blue hue with some angles. The main difference is that on the Zenfone 8 Flip, these are both glossy, making them look a bit futuristic. Naturally, the Zenfone 8 Flip bumps up the SoC to the latest and greatest Snapdragon ये लॉन्च 888. इवेंट सस्ता है, एप्पल And लॉन्च just इवेंट like लग on रहा the है. ROG मुकेश भाई 45 सीरियसली and बट मेरे को Zenfone 8, प्रेजेंटेशन अच्छी the लगी, 8 मजा आया Flip देखने uses में. the fastest थोड़ा supported बाकी LPDDR5 Xiaomi memory Realme से running थोड़ा at डिफरेंट है, तो 6400 आई एम लविंग इट. megabits per second. That's a nice bump over the LPDDR 5500 megabits per 5 second in and the UFS Zenfone 7 3.1. and most Okay. other phones on the market today. Like I mentioned, thanks to the camera system, you get an uninterrupted Nano Edge 6.67-inch Samsung AMOLED display with vivid Thank you, colors, Laksh Tyagi, silky Mars smooth se. responsiveness, no notch, no selfie cam hole. Ah, What's new on the 8 90 Flip Hz is that we Super moved the AMOLED fingerprint display, sensor from 1000 the power nits. button on the side. The 8 Flip now has the same in-display fingerprint sensor as on the Zenfone 8. And the same 5000 mAh battery is back in the 8 Flip. Enough to get you even through the most active 5000 days, mAh and battery. possibly even 2 days. Battery anxiety is a term Zenfone 7 and nowZenfone 8 यहाँ पे Flip कम users कर दी are display probably थोड़ी not सी. going to be familiar with. अब you can say And AMOLED just से like Super on AMOLED our आ गया है, other but models, refresh we have a set of refresh rate system और modes that either peak give you a brightness जो है वो कम कर performance दिया है. or battery life boost. On both the Zenfone 8 and Zenfone 8 Flip, we have 2 SIM slots. But the Zenfone 8 Flip can do even more, with 2 SIM slots and a microSD slot, so 3 in total. Instead of Definitely, carrying a 1+9 work पसंद and नहीं आता personal इस phone, बार. you can slot in your work and personal SIM cards into the same phone. And you can choose when to mute calls on each of Dedicated those SIM 2 card SIMs. slot. And thanks to a microSD card slot, you can not just extend your storage. No matter what happens, at any time, you can always just pop out the SD card and have all your data. Do you want to know more about the selfie camera? भाई AMOLED तो है बट Well, which one? उधर Because 120 there are हर्ट्ज है three to नॉर्मल choose from. कॉम्पैक्ट वाले में, We got a फ्लिप वाले में 64 90 हर्ट्ज दिया है. IMX 686 ये थोड़ा अजीब हो wide गया. camera, a 12 ओके 64 मेगापिक्सल IMX 686 सेम कैमरास दोनों, बट एक टेलीफोटो कैमरा है 3x का, बहुत बढ़िया. There is no better phone on the market. The Zenfone 8 Flip can not only rotate this top-of-the-line camera यहाँ पे system 90 हर्ट्ज और around to be 1000 used निट्स for क्यों कर regular दिया shots समझ में and नहीं आया. videos and selfie pictures and clips. The stepper Display motor बड़ी is कर so दी, smooth that you can even refresh take rate छोटा कर pictures दिया, oh and my god. videos while it's rotating and in motion. There's also an auto panorama mode in which the camera rotates through several angles. जिसका लाइक नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, लाइक कर दो यार. लाइक All करो. you have to do is hold the phone steady. Whoa, auto Taking panorama. pictures has never been this easy. There isn't just Panorama. the selfie and the rear camera setting. In free angle shooting mode, you can adjust the orientation of the camera. ओके freely to सो find फटाफट your से perfect 200 लाइक angle. हो जाए, मजा आ And in जाए. quick angle 200 shooting लाइक्स mode, कंप्लीट there are करवा free दो angle presets और you can switch to. चीज़ी देंगे हम आपको. 45, 90 and 135 क्विक degrees एंगल with the शूटिंग, press मेरे को of a ये single फीचर button. काफी अच्छा लगता है ये You फ्लिप can even कैमरा का. adjust those presets to then switch back and forth between your favorite angles with a single tap. Another benefit of हाँ the flip सही बात है system मुकेश भाई, is that हीटिंग front का and चक्कर जो rear है ना camera वो shots भयंकर होता look है identical. किसी भी फोन Since में. it's और the same camera Asus system. का लास्ट टाइम मिला था, So इवन की मेरे को याद है exposure, मैक्स white प्रो balance, सीरीज के जो colors, फोन्स है वो भी हीट focus, करते थे. bokeh, HDR, तो ये Asus it के all काफी looks फोन्स में है. identical, giving you full freedom over how you want to frame a shot and have a scenario and selfie pictures and videos match seamlessly. ओके फ्लिप कैमरास Without का the sun फायदा jumping, सेल्फी भी हम quality, बैक कैमरा से ले colors, पाएंगे. and focus वाह back and forth in मजेदार. picture and video compositions.
especially in dark and high contrast HDR situations like night sceneries and sunsets. The camera system in the Zenfone 8 Flip shines and is worlds apart from other selfie cameras. Now, an ultra-wide is new, but on the Zenfone 8 Flip, you have an ultra-wide camera on the front. So you can take ultra-wide selfies with everyone in the shot, even with large groups of people. So long, selfie stick. And thanks to automatic face distortion correction, everyone looks great, even people on the edge of the shot. In motion tracking mode, you can lock onto any object or person, and the flip motor then follows automatically, up to a full 180 degrees. It even zooms in and out automatically to keep the object in frame. It's almost like a single-axis gimbal and allows a really fun and interesting way to shoot short clips. I don't know. And we added a brand new feature, object focus, which is ideal for vlogging and show and tell videos. In this mode, okay, तो मुकेश भाई से आप लैपटॉप्स के बारे में काफी पूछ सकते हो. भाई को काफी कुछ पता है. Follows it as it moves around, automatically adjusting the focus. As you can see, our flip camera opens up more possibilities, giving you the freedom to explore new perspectives and get inspired. But again, don't take it from me. We're lucky the background to have an music expert कितना with us soothing here है यार, today. मजेदार. Let me welcome Ivan Zhangje. I don't know आप headphone पे सुन रहे हो कि नहीं? I would like to introduce a little bit about myself first. I've been living in New York City for the past 10 years, working as an independent freelancer. And I also had a full-time job at well-known Magnum Photos. I'm a photographer, artist, video director, and creative director. The concept behind my photography comes from the observation in daily life. Taking pictures using mobile phone is convenient to carry around. It gives me more possibility to capture my daily inspiration. Okay. Next, I want to share a little bit my experience capturing the moment in my trip to Jinmen, Taiwan using Zenfone 8 Flip. When shooting using my mobile phone in the past, my composition idea and shooting angle are limited to the size of the screen. But when using the camera of Zenfone 8 Flip, it increases the possibility. Zenfone 8 Flip creates a wider variety when taking pictures. You can easily capture panoramic image without having to move around. इसको डालेंगे कहाँ पे ऐसी फोटो? Convenient and amazing. When I do self-portrait with a mobile phone in the past, I always use the back camera because of the lower quality of front camera. But with Zenfone 8 Flip camera, I can now flip the front lenses and achieve better self-portrait images. True, एकदम true बोल रहे हैं मुकेश भाई. 5G को लेके इतनी टेंशन मत लो यार. 5G को आने में भी टाइम है. Creates beautiful foreground and background bokeh in the same quality of any other professional cameras. The video camera functionality of mobile phone is also a very important part for me. The 4K or 8K video format of the Zenfone 8 Flip allows me to 8K complete video a recording video production with high quality using just my phone. At the same time, the directional microphone enables the surrounding sounds to be completely captured, which means a movie-like production can be achieved by just using my mobile phone. On top of that, because of the built-in vibration reduction function, the video shooting is very stable and smooth. Professional photographers can also use the stabilizer alongside to achieve more precise composition. Next, I would like to share a short video. Enjoy it! Whoa! ये सब Zenfone 8 Flip पे कैप्चर किया गया है अकॉर्डिंग टू Asus. तो मान सको तो मान लो. मुकेश भाई कह रहे हैं इसका प्राइस होगा 150 रुपीज. 150 देगा रे. 150. ऑल्टरनेटिव टू OnePlus मैं कहूँगा OnePlus से कहीं ज्यादा बेटर कैमरास लगते हैं मेरे को इनके. वाओ, काफी लंबी वीडियो थी, पका दिया. Thank you, that was fun. I hope you guys are hooked and can't wait to get your own Zenfone 8 or Zenfone 8 Flip. Let me bring back SY to unveil the prices. As you can see,
Prices, guys, Zenfone 8 prices. is truly an extraordinary smartphone. Now, here is the moment Time for the everyone prices. has been waiting for. Zenfone 8 in a compact 5.9-inch size with flagship Snapdragon 888 performance, a 4000 mAh battery, and an IP68 rating will be available starting from Oh, bhai. $599. And the Zenfone 8 Flip with 8GB of RAM and the 256GB ROM will be 599 available euros. for $799. 799 Zenfone euros. 8 series will soon be available in numerous places around the world. I hope you are as excited as I am to start using Zenfone 8. Okay, Thank you so everyone finally for pricing joining is me out. today. देखते हैं इसका प्राइस क्या है. मैं जल्दी से Stay कैलकुलेट tuned करके आपको for बताता more हूँ. इन innovations यूरोस from us. 599 ordinary. euros. Oh wait, euros to INR अगर हम करते हैं और यहाँ पे 599 को करूँ, इट्स अराउंड 53K एंड 799 को करते हैं तो इट्स अराउंड 71K. ओ माय गॉड मैया, इतना महंगा कौन लेगा Asus. ओ मैया, इसको ज़रा छोटा कर देते हैं भाई, कि ऐसे रहने दे, ऐसे रहने देते हैं. चलिए कोई बात नहीं, मैं अपनी ज़रा आपके कमेंट्स खोलता हूँ और ज़रा डिटेल में बात करते हैं Asus Zenfone 8 के बारे में एंड 8 Flip के बारे में. काफ़ी झोलमोल हो गए हैं यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा झोलमोल हो गए हैं यहाँ पे. आई एम रियली कन्फ्यूज इन्होंने किया क्या है, क्योंकि भाई साहब कुछ चीज़ें झोल वाली हैं, कुछ चीज़ें बहुत तगड़ी वाली हैं. एंड मुकेश भाई, अगर अभी आप हो यहाँ पे तो मेरे को बताना आपको रेट कैसा लगा यहाँ पे. अराउंड 53K का 8 है और अराउंड 71K का 8 प्रो या 8 फ्लिप कह लो. सो इट्स लाइक दैट. और हाँ चलो, अभी ऐसा है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर देता हूँ. अगर मैं कर पाऊँ तो बहुत अच्छी बात है. Zenfone 8 के बारे में बात करते हैं. दैट इज़ द कॉम्पैक्ट वन. और यहाँ पे आपको 5.9 इंचेस का फ़ोन मिल रहा है, जो कि मेरे को बहुत अच्छी बात लगी है. कॉम्पैक्ट फ़ोन आया किसी एंड्रॉयड में, नहीं तो एंड्रॉयड फ़ोन से सिर्फ बड़े होते जा रहे हैं. 6.67 इंचेस से छोटे आते नहीं जल्दी. आता है तो कोई 6.5 इंचेस में आता है, तो वो भी कॉम्पैक्ट नहीं बोल सकते. बट आजकल के टाइम में कॉम्पैक्ट 6.4 इंचेस ही चल रहा है ज़्यादातर. बट यहाँ पे हमें 5.9 इंचेस मिल रहा है, जो कि अभी तक मेरे को लग रहा है इस साइज़ में कोई जल्दी को दे रहा है. नेक्स्ट चीज़ फ्रॉस्टेड ग्लास है, एल्युमिनियम फ्रेम है, और इसमें जो कलर आपको ब्लैक एंड सिल्वर मिल जाएंगे. बहुत अच्छा है, कलर्स यहाँ पे बड़े अच्छे मिलेंगे. स्नैपड्रैगन 888 है, जो कि 5G भी दे देगा, जिसका अभी कोई मतलब नहीं है. बट हाँ, अच्छा प्रोसेसर ज़रूर है, बहुत तगड़े वाला. द बेस्ट प्रोसेसर जो कि अभी तक आपको परफॉर्मेंस के लिए मिल सकता है वो है स्नैपड्रैगन 888. वो आपको देखने को मिल जाएगा. नेक्स्ट थिंग इज़ आपको यहाँ पे 4000 वाली mAh की बैटरी मिलती है. कंसिडरेबली यहाँ पे 4000 mAh की बैटरी आजकल छोटी लगती है, बट अगर मैं इसको यहाँ पे बात करूँ ना, देखो यार सीधी सी बात है, ये जो बैटरी ना इस कॉम्पैक्ट साइज़ के हिसाब से काफ़ी ठीक है. यहाँ पे जो डिस्प्ले थी वो 120 हर्ट्स वाली थी और 1100 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है, जो कि अच्छी बात है. विक्टस ग्लास लगा हुआ है, HDR 10+ लगा हुआ है, बढ़िया सब कुछ अच्छा मिल रहा है. 64 मेगापिक्सल का IMX 686 वाला कैमरा, 12 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड कैमरा, काफ़ी ठीक है. नाउ स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाएंगे, हेडफोन जैक मिल जाएगा, और यहाँ पर IP68 की रेटिंग देखने को मिल जाएगी, यानी कि वाटरप्रूफ. ये है 8. अब बात करते हैं 8 फ्लिप के बारे में. 8 फ्लिप आता है थोड़ा महंगा, बट ये आएगा आपको ट्रिपल कैमरास के साथ बैक साइड पे, और ये फ्लिप वाला है. जो Asus का फ्लिप कैमरा आया था पिछली बार, ये वो वाला है. एंड जिसने अभी तक वो नहीं किया ना, लाइक नहीं किया, वो लाइक कर देना. एंड ट्रिपल कैमरास के बारे में बात करूँ तो इसमें कैमरा सेम है, बट एक 3x वाला टेलीफोटो लेंस जुड़ जाएगा, और आप सेल्फीज़ जो हैं वो बैक कैमरा से ले सकते हो आराम से, तो कोई दिक्कत नहीं है. क्या यहाँ पे भी ब्लैक एंड सिल्वर डिज़ाइन मिल रहा है, ग्लास मिल जाएगा, एल्युमिनियम मिल जाएगा. ये वो 6.67 इंचेस की बड़ी डिस्प्ले विदाउट नॉच, बड़ी डिस्प्ले. बट यहाँ पे 120 हर्ट्स की जगह 90 हर्ट्स कर दिया है, विच इज़ अ वेरी अजीब थिंग. मतलब क्यों, मुझे नहीं समझ आया ये क्या कर दिया इन्होंने. 120 हर्ट्स से 90 हर्ट्स क्यों आगे. और अगर आप अपग्रेड कर रहे हो तो कोई चीज़ को नीचे क्यों ला रहे हो, वो उसको रहने दो वहाँ पे, बाकी चीज़ें अपग्रेड करो. तो यहाँ पे सुपर एमोलेड है, ये एक अच्छा लगा. उसमें एमोलेड था, ये सुपर एमोलेड, तो हल्का हल्का फ़र्क मिल जाएगा आपको. 1000 निट्स ब्राइटनेस यहाँ पे 100 निट्स से कम कर दिया, ठीक है, इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट किया. 5000 mAh की बैटरी बड़ी कर दी है, और डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट है. मोशन ट्रैकिंग कैमरा है. प्राइस इसका बहुत ज़्यादा है. अगर आप बात करो यहाँ पे
प्राइस की, तो यहाँ पे 8 जो है आपको मिलेगा 599 यूरोस का, 53,000। मैं एक चीज़ बता दूँ, इंडिया में आता है ना तो यूरोस से कम होता है प्राइस, तो इंडिया में प्राइसिंग कम होगी, तो आप लगा सकते। चलो बाय बाय, सी यू।